Hello and welcome to all of you once again in my channel Blue Chip Finance, which is purely for education and for learning. So once again we are going to continue our previous topic of estimation, in which 10 parts are already discussed with you. So in 11th part we are going to discuss 11th formula of estimation, which is a topic of statistics. So formula 11 is about estimation for confidence interval for the difference between two population means, dependent samples, paired observation. तो एक तो इसके अंदर ये है जी कि दो मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस आपको गिवन होंगी, और डिपेंडेंट सैंपल्स से मुराद ये है यहाँ पर कि एक सैंपल डिपेंड करेगा दूसरे सैंपल के ऊपर, यानी कि ये दोनों सैंपल्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसी सूरत में हम जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे जी डी बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 s ओवर n अंडर रूट, जहाँ पे ये जो d है ये बराबर होगा x1 माइनस x2, यानी फर्स्ट सैंपल माइनस सेकंड सैंपल इज इक्वल्स टू d, एंड d बार यानी कि ये जो आप इनकी सब्ट्रैक्शन लेंगे d की, उस d का मीन, तो जो कि बराबर है सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n के, और s इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड s स्क्वायर एज यू नो इज वेरिएंस ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएंस भी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, या सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बराबर है 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 सम ऑफ डी स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ डी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और n जो है वो आपका सैंपल साइज है, और यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे वो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं कि इट इज़ क्लेम्ड बाय द कंपनी दैट इट्स फ्यूल विल इंक्रीज द माइलेज ऑफ द मोटर बाइक्स बाय 5 माइल्स पर लीटर। कि एक कंपनी का ये क्लेम है कि उनका फ्यूल यूज़ करने से आपका जो मोटर बाइक है वो 5 माइल्स पर लीटर ज़्यादा माइलेज कवर करेगा। इन ऑर्डर टू assess this claim, mileage of 6 motorbikes were recorded before and after use of this fuel and data is given below। तो इस क्लेम को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर ये जो 6 बाइक्स हैं इनका सैंपल हमने लिया, तो n जो है वो कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद हमने we noted mileage before usage of this particular fuel। जो फर्स्ट बाइक है वो 45 माइल पर लीटर, सेकंड बाइक 34 माइल पर लीटर, 58 थर्ड, फोर्थ 52 एंड सो ऑन। और इसी तरह ये फ्यूल डालने के बाद आफ्टर यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल their mileage is 44 mile per liter, 48 mile per liter, 54 for third, 57 for fourth, and so on, and compute 90% confidence interval for the mean difference in weights for normal distribution। So here first of all we are going to calculate d bar।
So how can we calculate d bar? Simply we need here d, and d is equals to x1 minus x2. x1 is your first distribution and x2 is your second distribution. So 45 minus 44 is equals to 1, 34 minus 48 minus 14, and so on. And now sum of d is equals to minus 30. And di square is 1 square 1, 14 square 196, 4 square 16, 5 square 25, and 5 square 25, and 11 square 121. So sum of d square is 384. And simply in the formula we need these two very simple calculations. So d bar equals to sum of d divided by n, so minus 30 by 6 equals to minus 5. And for variance 1 over n minus 1, so 1 divided by 6 minus 1, sum of d square is 384, and minus sum of d whole square, sum of d is minus 30 whole square divided by n 6, and result is 46.8. But here we need standard deviation. So standard deviation is the root of under root of variance. So standard deviation is 6.84. And after getting this data, now we come to the calculation of tabulated value. So here first of all we calculate alpha, and alpha is 1 minus 0.90 because confidence interval is 90%. So 1 minus 0.90 equals to 0.10, and we need here alpha by 2. So alpha by 2 will be 0.10 divided by 2 equals to 0.05. And now t 0.05 not 0.05 by 2, 6 minus 1 is equals to 5 degree of freedom. So in 5 degree of freedom, here there is a mistake. Alpha by 2 equals to 0.05, so 0.05, and 6 minus so tabulated value is 2.015. How can we get this tabulated value? We go to the t distribution table, and degree of freedom is 5, and on 5 degree of freedom, as you are seeing here, 5 degree of freedom, 0.05, 2.015 is your tabulated value. So now just apply all this calculated data into this formula. So t bar d bar, as we calculated here, is minus 5. So minus 5 plus 2.015, that is t alpha by 2, n minus 1, and standard deviation as we calculated here 6.84, and n is 6, so 6 under root, so it is equals to 0.62. And we take one more time this calculation but with negative sign, and after putting negative sign the range is minus 10.62. so now population difference is minus 10.62 to 0.62. so that is the 11th formula of estimation. In coming videos we will discuss 3 more formulas for estimation, and after that this topic will be over. So till then, stay safe, stay blessed, take care of yourself and other persons around you, and make practice of all these previous formulas. Thank you.